So, hello everyone, myself Divya and I am from LEXIS and Company, and this video is about capacities of parties entering into a contract. So, we all know that almost every transaction around us is a result of a contract. When you buy vegetables from the seller, you promise to pay him money in exchange for vegetables. If you own a shop, you enter into two contracts, one with the manufacturer of the goods and second with the customer who will buy the goods from your shop. While buying the vegetables, we might not pay attention as to whether the seller is competent enough to enter into contract. However, if you are a shopkeeper, you need to check and be sure that the manufacturer is legally capable of doing so. This becomes important for you to hold the manufacturer legally liable for any defaults committed by him during the terms of agreement. So this article basically deals with the perquisites of a party before entering into the contract. Now let us begin. What are the legal requirements for a person entering into a contract? So Section 11 of the Indian Contract Act 1872 lists down the qualifications which enables a person in India to enter into contract, right? So first point is a person should have attained the age of majority and as per the law of country of which he is a citizen. So, in India, the age of majority is governed by the Indian Majority Act 1875, and as per Section 3 of Indian Majority Act 1875, an Indian citizen is said to have attained the age of majority upon the completion of 18 years. जब एक इंसान 18 साल का हो जाता है तब वो अपनी मेजॉरिटी की एज अटेन करता है. And in the USA, the majority of states and the UK, the age of majority is 18 years as well. However, if a person is below the age of 18 years and the guardian has been appointed for him, he shall attain the age of majority of 21 years. अगर पर्सन 18 साल का है तब उसकी मेजोरिटी होती है एज पर द जनरल रूल. बट अगर उसका गार्जियन है, उसका लीगल गार्जियन है एंड और द लीगल गार्जियन इज अपॉइंटेड फॉर हिम, तो उसकी मेजोरिटी एज होती है 21 years. Now second, a person should be of sound mind at the time of entering into the contract. As per the Section 12 of the Act, a person can be of sound mind when he can assess, understand his actions and realize the consequences of the obligations imposed on him at the time of entering into the contract. In simple terms, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जब कोई भी वो ऐसा कंडक्ट करता है, तो जो पर्सन इतनी क्षमता रखता है कि वो सही गलत और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसके ऑब्लिगेशन का, तो वो पर्सन को हम साउंड माइंड कह सकते हैं एज पर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट. एंड थर्ड इज अ पर्सन शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. नाउ what are the disqualifications for entering into the contract? We will discuss this in the brief. As per the Indian Contract Act 1872, all persons who do not meet the criteria as per Section 11 of the Act are incompetent to contract. Hence, we can deduce that the following category of the persons do not possess the legal capacity to enter into the contract. So, the first one is minor. As we have already discussed earlier, कि इंडिया के अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी इज 18 और every person who is below the 18 years is a minor. और अगर if the such child is appointed with a guardian, तो उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होती है वो 21 ईयर होती है. सो इसमें एक लीडिंग जजमेंट है महोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, 1903 का जजमेंट है ये. सो इसमें टोटल 4 पार्टीज हैं. First one is Damodar Ghosh, who is a minor boy below 18 years, and the second is Brahmadat, and who is a money lender. Or third one is Kedarnath, who is the agent of that Brahmadat, that is a money lender, and the Moheri Bibi is the wife of money lender. So इसके केस में क्या हुआ था कि धर्मोदास घोष जो कि माइनर है, इसके नाम पर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी. तो इसने वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखकर ब्रह्मदत्त को लोन लिया था 20,000 का. तो जो ब्रह्मदत्त का एजेंट था केदारनाथ, उसने उसको मॉर्गेज के बदले में पहले इंस्टॉलमेंट उसे दिया था 10,500 का. तो जब इन सब ट्रांजेक्शन के बारे में धर्मोदास की मदर को पता लगता है, तो उसकी मदर ब्रह्मदत्त को एक लेटर, केदारनाथ को एक लेटर लिखकर देती है कि जो भी ये सब इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है ये सब कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि जो धर्मोदास है वो एक माइनर है.
तो जब वो लेटर देखता है तो ब्रह्मोदत्त बोलता है कि ठीक है, बट जो भी बेनिफिट रिसीव किया है माइनर ने, धर्मोदास ने, वो उनको रिस्टोर वापस किया जाए। तो केस फाइल होता है अंडर द कैलकाटा कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर। तो उसमें वो बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ऑफ इन इशू है, मतलब कैंसिल कर दिया जाए। तो फिर उसके बाद अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है तब तक ब्रह्मोदत्त जो है वो मर चुका होता है। तो उसकी बीवी जो महुरी बीवी है, इसलिए केस का नाम है महुरी बीवी वर्सेस धर्मोदास। तो जो महुरी बीवी है वो केस फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट, अपील फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 64 और 65 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो ये बोलता है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड या वॉइडेबल है, उसके केस में अगर कोई भी बेनिफिट्स दिए गए हैं एक दूसरे को, तो वो पार्टीज जो है रिस्टोर कर सकती है फ्रॉम ईच अदर। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है क्योंकि कि सेक्शन 64 और 65 सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल होता है। बट जहाँ जो ये इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है बिटवीन धर्मोदास एंड ब्रह्मोदत्त, ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं सिंस बिगनिंग, क्योंकि जो धर्मोदास एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट ही वाज अ माइनर, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेड इन इश्यू है। However, if a minor enters into a contract and performs his part of obligations, the other party can be compelled to perform and fulfill its obligations, and in such instances, the contract becomes legally enforceable. Now, moving further to the second point, which is person of unsound mind. Unsound mind में जो आते हैं, कौन कौन आते हैं? Idiots and the lunatics. So, who are idiots? An idiot in the medical term is a condition of mental retardation where a person has a mental age of less than 3-year-old child. Hence, idiots are incapable of understanding the nature of contract, and it will be void since the very beginning. And the other one is lunatic, a person who is of sound mind for the certain duration of time and unsound mind for the remaining duration is known as a lunatic. This is the most important, कि कुछ टाइम के लिए वो साउंड माइंड का होता है और रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए वो अनसाउंड का होता है, उसे हम ल्यूनेसी कहते हैं। When a lunatic enters into a contract while he was of sound mind, that is capable of understanding the nature, that contract is a valid contract. This is a very important point कि जब lunatic में हमने बोला कि बंदा साउंड माइंड का होता है कुछ ड्यूरेशन के लिए और कुछ ड्यूरेशन के लिए अनसाउंड माइंड का होता है। और अगर जब पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है जब वो साउंड माइंड का था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं अगर वो बाद में अनसाउंड का हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। नो, ये वैलिड माना जाएगा, और अदरवाइज इट इज वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर द सेल ऑफ गुड व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, जब वो साउंड माइंड का था तब, और ए लेटर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, बट हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड माना जाएगा। नाउ अदर इज पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। A contract signed under the influence of alcohol, drug may or may not be valid. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। If a person is so drunk at the time of entering into a contract, so that he is not in a position to understand the nature and consequences, the contract is void. अगर कॉन्ट्रैक्ट में आने के वक्त वो ड्रंक है और वो पोजिशन में नहीं है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होता है। However, if he is capable of understanding the nature of contract, it will be enforceable. तब वो enforceable माना जाएगा। Now, for example, A enters into a contract with B under the influence of alcohol. The burden of proof is on A. अब A के ऊपर burden of proof है कि वो show करे that he was incapable of understanding the consequence at the time of entering the contract, and B was aware of his condition. Now, the third point is person disqualified by law. The first point is alien enemy. So, alien enemy is the citizen of the country India is at war with. Any contracts made during the war period with an alien enemy are void. An Indian citizen residing in an alien enemy's territory shall be treated as an alien enemy under the contract law. Contracts made before the war period either gets dissolved if they are against the public policy or remain suspended and are revived after the war is over, provided they are not barred by the limitation. And the second one is convicts.
A convict cannot enter into the contract while he is serving his sentence. However, he regains his capacity to enter into the contract upon completion of the sentence. For example, A is serving the sentence in jail. कि वो जेल में है अगर, तो any contract signed by him during this period is void. अगर ये नहीं है, अगर वो एक बार सेंटेंस हो चुका है तो उसके बाद जब उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता. ऐसा नहीं है. जितने ड्यूरेशन के लिए ही सेंटेंस, उतने टाइम के लिए अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं. अदरवाइज इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Other is insolvent. An insolvent is a person who is declared bankrupt against whom insolvency proceedings has been filed in the court. Resolution professional takes possession of his assets. Since the person does not have any power over his assets, he cannot enter into contract concerning the property. वो नहीं आ सकता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. Now, the other thing is competency to contract on behalf of another. कभी कभी ऐसा होता है हम दूसरे को कर देते हैं, जैसे लाइक मेरे बिहाफ पर एक थर्ड पर्सन एक्ट कर रहा होता है, तो उसके केस में क्या होता है. एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन कैन एम्प्लॉय another who shall enter into the contract with the third person on his behalf. कि खुद के बिहाफ पे, उस पर्सन के बिहाफ पे एक थर्ड पर्सन एक्ट करता है. तो द पर्सन इन दिस इंस्टेंस इज नोन एज अ प्रिंसिपल. जिसके बिहाफ पे वो एक्ट कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. एंड द पर्सन सो एम्प्लॉयड, जो एक्ट कर रहा है उसे हम एजेंट कहते हैं. एनी पर्सन मे बी एम्प्लॉयड एज एन एजेंट. कोई भी पर्सन एक्ट कर सकता है एज एन एजेंट. However, a minor or a person of unsound mind cannot be held liable for their acts to the principal. मतलब कोई भी एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, बट कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइनर है या जो कि अनसाउंड माइंड का है, वो लाइबल नहीं हो सकता है अपने एक्ट्स के लिए अपने प्रिंसिपल को, जिसके लिए वो काम, जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा था. An agent's authority may be either expressed, that is by the words of mouth, or documented in writing as in the power of attorney. Express होगा means in writing, or may be implied, that is might be deduced from the facts and circumstances of the cases. So this is about the capacity of parties to enter into the contract as per Indian Contract Act 1872. And hope you like my video. If you thanks for watching my video, and don't forget to subscribe my channel, and please press the bell icon. Thank you.